चलो हम अभी ये स्मॉल टैग के बारे में जानेंगे। स्मॉल टैग क्या होता है? स्मॉल टैग होता है और मैं अभी कुछ लिखता हूँ। इन दिस ट्यूटोरियल we are going to learn all types of tags। अभी मैं क्या लिखता हूँ, वी आर को स्मॉल लगाता हूँ, स्मॉल। अभी कंट्रोल सेव करके कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे और फिलहाल इसको ब्राउज़र पे चेक करेंगे हमारा रिजल्ट। What is a small tag in HTML? In this tutorial we are going is a small than these words। चलो, हमारा स्मॉल टैग किस लिए यूज़ होता है? पूरा छोटा सा वर्ड्स लिखने के लिए यूज़ हो जाता है। अभी मार्क टैग यूज़ होता है, मार्क टैग। कुछ ऐसा लिखेंगे, पैराग्राफ। दिस इज गुड कार, Ford is good car that I am going to buy soon। अभी हमारा ये पैराग्राफ हो गया। कंट्रोल से दबा के चेक करेंगे। Ford is a good car and that I am going to buy soon। अभी हम मार्क टैग लगाएंगे इसमें, अंदर मार्क। चलो हम रन करेंगे। अभी ये मार्क हो गया, हाईलाइट हो गया। मार्क मतलब हाईलाइट। Ford is a good car that I am going to buy soon। अभी हम देखेंगे इंसर्ट टैग। इसको हम ऐसा मेंशन करेंगे, पी पैराग्राफ लिख रहे हैं हम। पैराग्राफ में आई एम विश्वनाथ, इंसर्टिंग INS, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। चलो इसको हम चेक करके देखेंगे। रनिंग ऑन द ब्राउज़र। देखो, इंसर्टिंग टैग क्या होता है? आई एम विश्वनाथ, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका का आई एम फ्रॉम कर्नाटका, इसका एक नीचे अंडरलाइन है। हम ये इंसर्ट का जो भी इंसर्ट है, नहीं तो हम क्या करेंगे, यू दबाएंगे। यू इज नथिंग बट अंडरलाइन। चलो हम अभी फिलहाल इसको ऐसे रखेंगे। एक और पैराग्राफ लिखेंगे, दिस इज अंडर
चलो हम पूरा पैराग्राफ को एक अंडरलाइन बनाएंगे। अंडरलाइन अभी रन करके चलेंगे। ये अंडरलाइन हो गया। दिस इज इंसर्ट टैग।